You might have heard things about it. But one day, you decide to go see it for yourself. Welcome to Pakistan. Because for most of my life, I did not have a voice. Life story of a young woman. She will get married quite young, and she will have children and become a housewife. There's nothing wrong with this, but what was wrong was that was where my story and the story of all my friends began and ended. And I always knew that that was not the entirety of my life. People in the organization that had their own dreams and passions were strongly discouraged and told that these things were only distractions from what they needed to be doing. Growing up, I was told, look at that woman who laughs too loudly, who has a story beside that of her husband and her children, who dreams of going to university, and be careful that you don't end up like her. While I saw my brother learn about the paths of stars through the night sky, or the stories of kingdoms and empires from ancient times, I was being taught how to bake a cake or remove a stain from a rug. And I just always felt that there was so much more that I was missing. When I was young, I decided to write a book. And this book was about an idea that I had. I researched it from hundreds of other books that were actually forbidden for me to read. My idea was that deep down we are all the same, and that past the borders of time and space, no matter if you are in ancient Egypt, Victorian London, or the modern day, that we all want the same thing, and we all seek meaning, love, and happiness in life. After 2 years, when I finished the book, the organization found out about it, and the message was not very well received. So one day I watched as this book that I had taken years handwriting was literally thrown into the trash. After this, I continued to let others narrate my life story for quite some time. I did eventually leave the organization, but I was trading their story of my life for another. I thought that when I was out in the real world that everything would be absolutely perfect and everyone would listen to my dreams and support my ambitions, and it would be just like the movies. And it took me a while to realize that no one is going to give those things to me. No one is going to give me a voice or a story of my own. That is something that I have to go out and make for myself. All through my life, there have been a lot of people that have told me that things are impossible. I was told that traveling the world alone as a young woman was not possible, that becoming a YouTuber is not possible. And there have been concerns, there have been people that said,
how will you make money? Or how do you know that the countries that you're traveling to are actually safe? How do you know how to trust people and who to trust? And there are such a thing as concerns, and then there is fear, and fear should never narrate the story of our lives. And I am so glad to have found my voice in this world and now be here in Pakistan, where I have wanted to come for years and be sharing this with all of you. The book that I wrote years ago may have been lost, but I think that the idea that was behind it, I am now, instead of just writing this story, I am living it. Thank you so much. I'm so glad to be here in beautiful Pakistan. If you honestly ask me, I'm just getting started here. What matters is that you are being yourself and you are staying true to your identity. Do not let nobody change you just because they feel comfortable with that idea. Number 2, share your ideas. Guys, this is so important to just notice over here. Write this one down. You need to share your thoughts and ideas with the world. If an idea comes in your head, it came in your head for a reason. It has been put there for a reason, for you to act upon it. And believe me, these thoughts and ideas will eventually become like actions. You never know that this particular idea you have in your mind, it can make you a millionaire one day. First of all, I would like to thank you for Alpha Growth for inviting me here. तो मैं उर्दू में बात करूँगा. मेरा टॉपिक था टूरिज़्म. पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है टूरिज़्म का. अगर इस पर सही तरह हम लोग तवज्जो दें. मैं सिर्फ नॉर्थन एरिया की बात नहीं कर रहा. इनफैक्ट मैं पाकिस्तान के सब प्रोविंसेस में माशाल्लाह बहुत टूरिज़्म पोटेंशियल है. पाकिस्तान में यूनिक ट्राइबल कल्चरल डाइवर्स लैंग्वेजेस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स स्पेशली वो जो मुगल बादशाह और सिख यहाँ छोड़ गए थे. हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ सेक्टर में ले जा सकती है. So we should have the best international standard of tourism in this country. Pakistan is blessed with excellent tourism. From Kyrgyzstan to Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, and other less explored countries in my old-timer campervan. I'm a good fan of van life now, saving lives soon again. Will you join me for the ride? I already
you've already seen earlier why my name is now Hula Hoop, or do you want me to do the dance again? Oh yeah. I'm also going to tell you guys the story of why I became a YouTuber, vlogger, vlogger, video blogger. I sometimes just don't know how to call it. Yeah, so from when I was young, really small, I always wanted to travel the world. I wanted to see all those beautiful places and all those interesting cultures all over the world. You know what? Actually, that's not true. When I was 5 years old, I wanted to be a fireman. But after that, I always wanted to travel and see the world. And I grew up in a family that was in business, so it was the normal thing for me to go in business as well, and that's what I did. I graduated economics, I worked a year at a bank, and then I started my own business. And it just wasn't for me, it just didn't make me happy. So, you know, there's a difference between my culture and the Pakistan culture, which is that the Pakistan culture is really family oriented, and my culture is just not. So, generally, between the age of 16 and 20, people move away from the parents' house, and the parents also do not want the children to move back home. So it was a little bit easier for me to make this step. So I sold everything I got, and in that time, I found out that people were traveling around the world making these YouTube videos and making money with that. And I thought, that is what I want to do too. And that's what I did. I started traveling, started making YouTube videos, and I thought, you know what, after 1 year of making YouTube videos, I'd probably make like a full-time travel income, right? Well, that wasn't true. Now, after almost 3 years of traveling, I'm almost self-sustainable, and that's great. I can continue traveling from the money that I earn, and with that, I also want to make my end conclusion. I gave everything up, I followed my dream, and I think everybody who wants to follow their dream should do the same. So this is for you, Pakistan, follow your dream. That's really amazing, Mark, that you left a relatively stable career and decided to follow your passion. And I think that's very brave, and we can all see some inspiration from that. And while we're on the note of Pakistani talent, we have with us the band 360, who is a musical performance for this evening. We would like to call you up on stage, and you guys can enjoy. I want to thank Alpha Pro who made this event, international vloggers who have joined us. Mark, thank you for coming here, man. Thank you.
ये सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के खूबसूरत स्पॉट को डिस्कवर करें और इस तरीके से हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने जब अपना पहला व्लॉग पोस्ट किया तो उस पर काफ़ी लोगों के जो है सपोर्ट भी किया, अच्छे कमेंट्स भी थे, क्रिटिसाइज भी था, बुरे कमेंट्स भी थे। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि किसी ने बोला कि इनको पिंडी लेके आओ तो इनको पता चले कि स्कूटी कैसे चलाते हैं या बाइक कैसे चलाते हैं। सही कहा। तो मैं तो उसको रिप्लाई नहीं कर सकती वहाँ पे, लेकिन अभी उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं पिंडी में रहती हूँ, हम दोनों पिंडी में रहते हैं और हम पिंडी जो है ना वहाँ से होकर इस्लामाबाद आए हैं। और इंशाल्लाह हम आफ्टर रमज़ान नॉर्दर्न एरियाज जाएंगे, इसी 49cc स्कूटी पे जाएंगे। और जो फेसबुक की बात सना ने की, जब फर्स्ट वीडियो हमारी पोस्ट हुई थी तो लोगों ने कमेंट किए थे, जिसके नीचे काफ़ी कमेंट्स जो थे वो ये थे कि ये 49cc स्कूटी पे कैसे जाएंगे, ये तो रावलपिंडी जो रोड्स होती हैं टूटी हुई, वहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ गिर जाएंगे, इन्हें वहाँ लेकर आओ। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आफ्टर रमज़ान हम वहाँ पे जाएंगे और आप देखेंगे। थैंक यू। Well, it's a pleasure, Marsha, to hear about your experiences. And just one last question. I think there's so much that the audience can learn from you. You may not be a vlogger, but I think you're a source of inspiration to many. How can the rest of us travel the way that you do, having seen so many countries at a young age? Well, not everyone wants to travel the world the way I do because it's definitely not comfortable. It's not comfortable at all. But if traveling is something that you want to do, I'm sure there's a way to do it. Like you can save money, learn which countries that you can go to without facing restrictions, and maybe you have to convince your family to let you go. But if traveling really is something you want to do, you live in a day where it has to be easier. लगता है चाय का वक्त हो गया यहाँ पर। ओके, क्राउड में ज़ैनुल आबदीन साहब आप भी आ जाइए। ये so कैसे हैं आप सर? How are you guys? All right, for the sake of our guest, I will be talking in English most of the time. But in order to interact with the audience, once in a while, we'll be playing around with 4 different languages. Okay? So, tell me something about yourself. My name is Sean Naveed and I am a vlogger. And I am a full-time vlogger. I am making enough money that I don't need any job to do for a living. So, this is who I am. एक तो सबको ये सिखाना पड़ेगा कि देखिए वीलॉगिंग के लिए पैसा है, तो कोई बोलेगा ना आपको कि यार कमाते किस तरह हो, तो बताना ये फुल टाइम जॉब है. This is something we will all be learning about, that how vlogging is a full-time profession too. It's something we people do not get. Now the idea about having this panel discussion today is to inspire more vloggers to come on board. Okay, so you guys are the stars. You guys have been doing it for a really long time. So a small discussion about your introductions, and then afterwards, how to keep this up for the next. I'm Amel. I'm from France, and I'm very happy to be here. I'm a yoga teacher, so I give classes in Islamabad right now. And I travel. So, and I've been in Pakistan for the last 5.5 months. Yes, and I'm very happy. Yourself, my friends. Is that mic working? Oh yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं एक विलेज ब्लॉगर हूँ, विलेज से तल्लुक़ है मेरा, तो मैं विलेज रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, अपना विलेज दिखाता हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सो बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें। Okay, Zabardast. Now, some questions about what has happened so far in Pakistan since you guys came over. Number one, what's the funniest thing that has happened to you since you started vlogging? Yeah. What's the, okay, funniest or craziest thing that has happened in Pakistan since you've come? Okay. I don't know if I can say everything. Oh, just a version we can put out.
That I is mean, the boring. craziest is to be invited by the Pakistan Air Force for the Nalta ski competition. Skiing competition? Yes, we went on an airplane, Okay. C-130. So yeah, this is crazy. Okay, that qualifies. What about you? सबसे मजेदार चीज अभी तक जब से vlogging start किया है, ये सबसे पागल खाने वाली चीज? बेसिकली मेरा विलेज से तल्लक है, तो वहाँ पे किसी को नहीं पता वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या है। यूट्यूब के बारे में भी कई लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब हम लोग वीडियोस अक्सर बाहर बना रहे होते हैं, भाई मुबशर की वीडियो बना रहे होते हैं, मेरी बना रहे होते हैं, तो लोग बस देख के कहते हैं आप लोग पागल हो, आप लोगों के पास कोई और काम करने को नहीं, अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तुम भाई मुबशर कहते तुम इतने बड़े हो, तुम तो काम करो, ये क्या है, क्या मिलेगा तुमको इससे, काम की तरफ ध्यान दो। तो बस इसके ऊपर ये काम नहीं लगता ना लोगों को भी। नहीं, अब पहले शौक है तो फिर काम नहीं लगेगा, आप काम समझ के काम कर रहे हैं तो फिर काम लगेगा। सही, तो ये शौक है तो काम नहीं लगता है। वेरी ट्रू सर। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ था। मैं बल्कि एक बताता हूँ मेरे साथ हुआ कि मैं एक बाड़ा बाज़ार है रावलपिंडी में, वहाँ पर मैं व्लॉग शूट कर रहा था। मोबाइल से ही मैं करता हूँ, मेरे पास ना ड्रोन है ना DSLR है, ओनली है या मोबाइल। और मैं वीडियो चलते चलते बना रहा था, तो एक लड़का ना मेरे पीछे चलता चलता आ रहा, मुझे फॉलो कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, मुझे बोलता है कि आप औरतों की वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा भाई जब जिनकी वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या है। तो बस ये हुआ था मेरे साथ। In terms of vlogging in Pakistan, how many vloggers you guys follow? Are there any ones which you follow from Pakistan or internationally on a regular basis? जिनसे आप लोग इंस्पायर हुए? हाँ, प्लीज। मैंने जब व्लॉगिंग शुरू की थी तो मुझे व्लॉगिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। कैमरे के पीछे मुझे भाई समझाते थे कैसे बात करनी है, तो तब मैं किसी ब्लॉगर को फॉलो नहीं करता था, भाई को फॉलो करता था, वो कैसे बात करते हैं मैं सेम उनकी तरफ देख के बात करता था। फिर जैसे जैसे बड़ा बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे, और मेरी नज़र में पाकिस्तान में जितने बेस्ट ब्लॉगर हैं ना पूरी दुनिया में नहीं हैं। आप इरफान जुनेजो को ले लो, आप मूरू को ले लो, आप यूखानों को ले लो, किसी को भी ले लो, एंड लेवल की वीडियोस होती हैं। और अगर आप इंटरनेशनल की बात करो तो इंडिया में से मुझे एक ब्लॉगर पसंद है, मुंबई बाई के निखिल, जिनको मैं रेगुलर देखता हूँ। पाकिस्तानियों को तो मैं देखते ही देखता हूँ, तो उनको ही मैं फॉलो करता हूँ कभी कभी, लेकिन उनसे सीखता हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ। ओके, वेरी नाइस। Clappings please for this gentleman. Also, I'll be taking 3 questions from the audience, so you guys can think about it as well, to all of these guys, 3 each. So you can come up with the questions while I keep asking. Yourself, any vloggers you follow worldwide as for inspiration? Okay, I am quite new to this world actually. Well, it's been 9 months. I started vlogging for my parents, my dad, because he was so scared. So I was like, oh, okay, I will do videos for That's him. a great way when you're traveling, show it to your parents. They मैं हूँ यहाँ पे. And now I am here. I know the major ones in the world. So you're the best blogger on the planet. You No, I didn't say that. I just say that I'm too busy practicing yoga, so. Got it. No, I know some, but that's all. I'm not, yeah, that's all. No problems. You, sir. मैं केसी नाइस्टेड, पीटर मैकेनन और पाकिस्तानी में जुनेजो, युकानो हो गया, मोरू हो गया, इन्हीं को फॉलो करते हैं। Okay, very nice. If I can ask one by one again, how do you guys maintain yourself financially when you're going out for vlogging? Or how do you want to maintain yourself? Both questions. बेसिकली जब आप YouTube पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो 6-7 महीने तो आप भूल जाएंगे आपको कुछ मिलेगा। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियोस बनाते रहना होगा। पहले से बेहतर वीडियो बनानी है, जो भी आप वीडियो बनाते हैं उससे बेहतर बनानी पड़ेगी। उसके बाद जब मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है तो YouTube एडसेंस से ये पैसे देता है, और शुरू में अर्निंग ज़्यादा नहीं आती, हो सकता है कि 3 महीने बाद आपको आती है या 2 महीने बाद आती है, शुरू में इसी तरह होता है।
लेकिन जब जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, तो इनकम भी आपकी एडसेंस के ज़रिए इंक्रीज़ होती है और आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलना शुरू हो जाती हैं। स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्सरशिप जब आपको मिलना शुरू हो जाती हैं तो बेशक आपको यूट्यूब से पैसे कम भी आ रहे हैं ना, तब भी हाँ बिल्कुल कवर हो जाता है, बल्कि उम्मीद से भी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बहुत अच्छी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो यही सीन है। वो एक्सपीरियंस हो रहा है अभी पाकिस्तान में। जी जी। Very good. Yourself? So I saved money in France to travel, and now I am earning money via the classes I give. I'm sure if you go to different places, you teach yoga, right? Yes. That's a great way to, do small workshops as you go along the whole world. Exactly. So, And I get invited here to travel also sometimes. So. All expenses paid trip. Well, kind of. Nearly. Yeah. Okay, great. Yourself, buddy? बेसिकली मैं बाहर जाके वीडियो तो बनाता नहीं, अपने विलेज के रिलेटेड बनाता हूँ। हमारे विलेज में क्या लोग करते हैं नॉर्मल रूटीन में, मैं क्या करता हूँ वो दिखाता हूँ। तो घर में सबसे छोटा हूँ मैं, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उन पे है। तो मुझे जब भी ट्रैवल करता हूँ तो इनके साथ करता हूँ मैं, तो वही देखते हैं पैसे के रिलेटेड सब। मुझे मैं सिर्फ जैसे आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, आप पॉकेट मनी लेते हो अपनी मम्मा से, वैसे ही मैं अभी भी लेता हूँ, चाहे मैं ब्लॉगर हूँ चाहे जो भी हूँ। तो बड़े भाई किस तरह इंस्पायर करते हैं आपको सबसे ज़्यादा? जी जी, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में। जी वैसे एक चीज़ है कि there's some interesting facts which I can tell you about the YouTube as well as the vlogging industry. Every minute you're looking at up to 200 gigabytes of videos being uploaded. Gigabytes. Alright, so every minute it's going out there. मेरा पैशन नहीं है। हाँ, मैं बिजनेसमैन, मैंने पैसा कमाना है इसके लिए। आप इनको बताइए कैसे पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इनकम चैनल को 1 करोड़ रुपया एक साल में कमाएंगे तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग ऑन इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नहीं, सबके ज़हन में ये सवाल है कि पैसे कितने एक ब्लॉगर जो है कमा सकता है, और मैं इसका जवाब देना भी ज़रूरी समझता हूँ। ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है सबके लिए, हो सकता है इसी से किसी का रिस्क जो है वो चल निकले। तो अगर मेरी वजह से या हमारी वजह से किसी का रिस्क जो है वो किसी का कारोबार चल निकलता है तो ये बड़ी बात है। तो मैंने BBC के इंटरव्यू में क्लियरली बताया था कि 3,25,000 या 3 लाख से 25,000 कभी कम हो जाते हैं ये पर मंथ एवरेज, जिसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा आज कि शुरू के 6 माह मेरी अर्निंग नहीं थी, शुरू के 6 माह बिल्कुल भी मेरी अर्निंग नहीं थी। तो आप खुद देख लो कि 2 साल हो गए हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए, फूड व्लॉगर हूँ मैं। तो अगर 6 माह की मेरी कमाई नहीं थी तो अब मैं एवरेज कह रहा हूँ तो कितना होगा, अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ कि सबको जो है जवाब मिल गया होगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी सोच से भी बड़ा। मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, आपके कितने आएंगे, काम जो है छोटा कोई नहीं होता, ये तो काम ही बहुत बड़ा है। 3 ही चीज़ें हैं जो बंदे को चाहिए होती हैं, वो इसमें तीनों मिल जाती हैं, ठीक है। पैसा बहुत ज़्यादा है, हमारी सोच से भी ज़्यादा। नॉर्मली जो है कारोबार जितने भी हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स हैं, ख़तरा है आपके इन्वेस्टमेंट डूबने का, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है नहीं बिल्कुल भी। मैं अगर खाना बनाता हूँ तो मेरे घर वाले सारे खुश होकर खाते हैं। 2 चीज़ें हो गई, घर वाले भी खुश हैं खाना खा के, और पैसे कमा के भी घर वाले खुश हैं। तो हर लिहाज से घर वाले खुश हो जाते हैं इस काम से। बेफिक्र होकर आप काम शुरू करें, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन मसला सिर्फ एक चीज़ में है, पैसे के पीछे। मैं कंपनी में जॉब करता था तो वहाँ पे जो CEO थे उन्होंने कहा कि जो है ना लालच वाला बंदा वो मुझे चाहिए। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, लालच तो बुरी बला है। वो कहता है कि जिसमें लालच होगा कि मुझे पैसा चाहिए अच्छे पॉजिटिव वे में, तो वो मेहनत ज़्यादा करेगा, ऐसा ही है ना। तो मेहनत करें, फील्ड बहुत बड़ी है,
इसमें आप पर मंथ जो है 10 लाख भी कमा सकते हैं। मैं अपनी अम्मी को अक्सर कहता हूँ कि अम्मी इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि एक दिन में 1 लाख रुपया हम कमाएंगे। Well, guys, that will be the end of the panel discussions. Any other questions you can ask during the breaks afterwards. Abhi, just handing it over to the host. तो मुस्तकबिल बहुत है इसमें, फ्यूचर बहुत है। शर्त सबसे पहली शर्त ये है कि मेहनत। हम में से हर नौजवान बदकिस्मती है कि शोहरत भी हासिल करना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, लेकिन अगर वो एक काम नहीं करना चाहता तो वो मेहनत नहीं करना चाहता। तो मेहनत के बगैर कभी भी आगे नहीं आप जा सकेंगे। शॉर्टकट इसमें नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आपने चलना है तो आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन 2 + 2 4 है, इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत शुक्रिया। You know, it's the second most beautiful capital in the world. Yes, so few words regarding. I've heard that it's the most beautiful. Okay. Okay. So after Skardu, you will back to Islamabad. Right. Then where do you go? And then I will leave To Uzbekistan.